guys, welcome back to my channel. I hope everyone is doing great. So today I have come up with my skincare products. So basically today's video is a haul video where I will be showing you what all products I bought for my skincare routine. There are some products which I'm already using, so there will be a mini sort of review for that product as well, and there are some products जो अभी newly मैंने purchase किए हैं to try it out on my skin. And please let me know in the comment section below if you want to know the detailed review about that product. So yeah, let's start with my haul. Let me just show you how the products which I bought from some are from Amazon and some are from Nykaa. So yeah, let's start first of all with the moisturizer. So this is the moisturizer. I hope everyone can see. This is the moisturizer from Pond's, and this is super light gel moisturizer. Let me just open this bottle for you, and you can see it comes in a gel consistency. It is in a gel consistency, and ये जो है I generally go for the product जो gel based moisturizer होने चाहिए for my skin, because I don't like extra greasiness on my skin. So yeah, this product is new for me. It says it has hyaluronic acid and vitamin C. So let's see how it works, because because of this only I bought this product, and this retails for $2.99, but I got something around 250 rupees. I will mention the screenshot as well. But yeah guys, I just wanted to take a minute and just wanted to let you know guys कि this is the product जो मैंने purchase किया है from Nykaa. I will show you the box as well. This is the box of Nykaa, and मुझे वहाँ पे actually to be honest थोड़ा सा expensive मिला है, and the same product is available on Amazon as well on the same quantity, and वहाँ पे थोड़ा सा rate का difference है. I think 30-40 rupees कम है. So I would recommend you guys कि if you are going for this particular moisturizer, go check it out on Amazon as well. Amazon से, because I have purchased from Nykaa, but I would recommend you कि आप Amazon से purchase करें, वहाँ पे थोड़ा कम rate है. So yeah, it comes in 150 ml में ये आता है. It is hydrochloric and vitamin C है. It's non-sticky, and generally I love Pond's products. मैं पहले Pond's के moisturizer use कर चुकी हूँ, so I love Pond's के products. So yeah, I just wanted to give it a try, and I will let you know guys. If you want to have a detailed review on this product, please comment below. I will be much more happy to do that for you. And yes guys, so yeah, now the next product which I bought is Neutrogena Hydro Boost water gel. This is also a same moisturizer. As I said, I have been trying new products on my skin. ऐसे तरीके का एक बॉक्स आता है, you need to open like this. बहुत छोटा, it is only 15 grams of the product इसमें है, and this retails for rupees around 370. I think I have bought, और इसका बड़ा वाला bottle is around 800 to 900 rupees. So guys, this is not a budget friendly moisturizer, but yeah, मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, so I just thought to try it out. And generally guys, मैं कोई भी चीज़ परचेस करती हूँ, I generally go for the minier version in lipsticks as well, जो मैंने previously शुगर के लिपस्टिक्स आपके सामने रिव्यू की, बिकॉज उससे हमें आइडिया आ जाता है कि वो प्रोडक्ट हमारी स्किन पे कैसे वर्क कर रहा है. सो या, आई जस्ट डोंट वांट टू स्पेंड 800 to 900 रुपीज़ ऑन सम प्रोडक्ट जो मेरे फेस पे काम ही नहीं करे. So yeah guys, that's the reason I just bought the minier version, and please let me know if you want the review of this product. बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस है इसके अंदर, ऐसे जेल बेस्ड प्रोडक्ट आता है. द टेक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट इज सिमिलर टू जैसे इसका टेक्सचर था, बिकॉज दिस बोथ आर वाटर जेल मॉइस्चराइजर, सो टेक्सचर विल बी सिमिलर वन. एंड या गाइस, ये आई कांट कमिट एक बार यूज करने से. जस्ट नाउ आई हैव यूज्ड. सो या, दिस इज कम्स इन 15 ग्राम, एंड दिस 15 ग्राम, एंड दिस रिटेल्स फॉर 370 rupees. So it is on the expensive side guys, so I would recommend ki you should also go for the mini bottle. And if you like the product on your skin, and if you feel कि इतने पैसे you should invest on this moisturizer, then you can go for it, or you can let me know. I will be giving you the
detailed review about this product. Now also would like to let you know कि पहले मैं कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करती थी. So this is the moisturizer from Lakme Absolute. I have the mini bottle as well. As usual I said I first go for the mini version और मुझे ये अच्छा लगा था. This is for 200 rupees. Okay, but इसका बड़ा वाला बॉटल I don't know, मतलब मुझे I think I got this one at rupees 370. इसमें तो MRP is written 520. I will mention the link in the description box जो भी इसका current rate रहेगा, because it's been a while I am using this product. I can show you how much I have used. You can see how much I have used this product. मुझे ये प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. दिस इज जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर. एज आई सेड आई जनरली प्रेफर द जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ग्रीसीनेस नहीं देता है, तो उससे आपका मेकअप का बेस भी बहुत अच्छा रहता है. तो इफ़ यू आर समवन हु डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन दिस न्यूट्रोजेना फॉर 370 रुपीज़, यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस लैक्मे वन. आई डोंट नो, इसका रिजल्ट तो बहुत अच्छा है. आई जस्ट नीड टू चेक अबाउट दिस. So yeah, this is the moisturizer which I used to use before, the one which I bought right now. Now the next product is the face serum. So this is the face serum from Plum. So yeah, I'm so sorry. So yeah, this is the face serum. ऐसे इसका बॉटल आता है. This comes in this type of bottle and आप इसको you open करके, this is the good, it has a good applicator. And guys, आप कुछ भी लो कि मतलब you should buy this serum. It is it does miracle on your skin. It's helpful for your glow restore. and ये 30 ml का product है. I am not more fascinated about this ingredient, but this works like a magic on your skin. But I have, let me just show you. मेरे पास एक ये पुराना बॉटल पड़ा है. दिस I have completely used. This is my third bottle guys. ये मेरा second bottle था जो मैंने ख़त्म कर लिया. I can't live without this serum. So मैंने ये वापस से इसको ऑर्डर कर दिया है. This serum also I bought from Amazon guys, because Nykaa पे it was a bit expensive. इसका प्राइस है 775, बट आपको 600 के आसपास मिल जाता है Nykaa पे भी, एंड Amazon पे भी you will get less than 600 rupees. So that's the reason I bought from Nykaa. I will keep the product details in the description box, and यहाँ पे भी I will try to keep the screenshots जो भी at what price I have purchased this product, because I don't really remember बहुत सारे products I have bought. So yeah, so this is something you should invest in a good serum. ये आपके ये बहुत ही मिनिमल प्रोडक्ट आपको आपकी स्किन पे अप्लाई करना होता है. उसके बाद बहुत अच्छा सा आपके फेस पे शाइन दे देता है, और बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है. बीइंग ऑयल बहुत अच्छे से एक शाइन सा फिनिश देगा आपके फेस पे, एंड उसके ऊपर यू कैन डू योर मेकअप. एंड द प्राइमर इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड इफ यू आर यूजिंग दिस ऑयल. एंड ये चलता भी बहुत ज़्यादा है. आई थिंक ये 6 मंथ्स तक आराम से आपको आपकी स्किन आपकी बॉटल चल जाती है. 6 मंथ्स तक यू कैन यूज दिस बॉटल. तो आई फील लाइक इट्स वर्थ परचेजिंग, बिकॉज अगर आप 500, 550 या 600 रुपीज़ में भी यू आर परचेजिंग दिस पर्टिकुलर सीरम, एंड आपका अगर ये 6 मंथ्स चलता है, सो दिस इज़ अ गुड डील. एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड टू लेट यू नो गाइज कि प्लम इज़ माई फेवरेट ब्रांड. अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको कौन से सीरम्स यूज़ करने चाहिए, कौन सा मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहिए आपके स्किन पे, और विच फेस वॉश यू शुड गो फॉर, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस प्लम प्रोडक्ट, बिकॉज इसके सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे आते हैं. इट विल नेवर मेक यू डिसअपॉइंट. आप कभी भी इन प्रोडक्ट से डिसअपॉइंट नहीं होंगे. इसको आई एम यूजिंग देयर आई हैव देयर बॉडी वॉश, आई हैव देयर फेस सीरम, आई हैव देयर फेस पैक्स. मेरे को दिस इज द वन ब्रांड जिन्होंने मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया है गाइस. सो या आई वुड रिकमेंड, हाईली रिकमेंड दिस सीरम from my whole skincare haul. I will recommend this product to go for it. So yeah, now coming to the next product which I bought, it is a L'Oreal Lift Crystal. It is in the mini version, so दिखता बहुत बड़ा है. I was not expecting इतना छोटा है. It is in 22 ml and it's costly as well. It is around 250 rupees, but I was expecting the bigger size in this bottle, but ठीक है,
This is the size they are giving us in 250 rupees. I think it is quite expensively बाहर आ चुका है. और ये भी you can see 75% जितना ही fill किया हुआ है bottle. You can see इतना bottle है 22 ml and it's for rupees. I don't know how to use it. मैंने just in front of you I have used. It is a lift for smoothing and radiance. I don't know it's worth or not. I will be trying this product and I will be giving you the detailed review how it worked on my skin. So yeah, it is for 22 ml and it costs rupees around 250 rupees. So yeah, as I said, I always go for the mini one. अगर मुझे ये अच्छा लगेगा, I feel कि ये mist is worth buying, then I will be purchasing the bigger bottle considering the price as well. Now next, it is a basic thing which I bought. This is the Vaseline Intense Care Coco Glow. Coco Glow ka now it is on a non-greasy. You can see it is written over here. It is non-greasy wala. But initially when Vaseline came up with this Coco Glow, वो इतना ज़्यादा greasy था and it stays for 24 hours. ये भी अच्छा खासा बाकी सारे Vaseline से ये सबसे ज़्यादा stay करता है. And considering the winter है अभी, तो I just want it's a moisturizer body lotion. I mean the body lotion which stays on my skin for a longer period of time. So yeah, I just went for this one and इसकी price है 375 rupees, but I got around 250 rupees from Amazon and this was also as expensive side on Nykaa. So guys, I would recommend you कि if you want to save your money, purchase from Amazon. And ये काफ़ी अच्छा है, budget friendly भी. I would say this is budget friendly because ये आधा लीटर का bottle, it is about 400. हाँ, it is 400 ml of bottle. So yeah, it's a good deal guys. 250 rupees में 400 काफ़ी चलेगा, पूरा मेरा winter निकल जाएगा. Body lotion is something initially I used to use अभी free. I love cocoa butter. मैं बहुत बड़ी fan हूँ कोको बटर्स की. तो या तो पहले मैं यूज़ करती थी दिस वन. दिस इज़ फ्रॉम हिमालय. आई एम सो सॉरी. दिस इज़ फ्रॉम हिमालय. मैं पहले ये यूज़ करती थी. दिस इज़ फॉर 250 rupees and 400 ml. I think it is a good deal for you guys. Last product from my skincare is the Plum. As I said, Plum ka shower gel, which I have recently bought. It's been a week because ये धीरे धीरे सामान आ रहा था, so I planned to haul एक साथ. So this is the Plum का shower gel. So ये अच्छा, this comes in a quantity of I think 300 ml. It is amazing guys, but it is expensive as well. It is around 400 rupees. So 400 rupees में आपको 300 ml shower gel मिल जाता है. It smells amazing. और ये आप जैसे you will apply, you will use it in your while taking shower, और उसके बाद वो काफ़ी देर तक आपके स्किन पे उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो रहेगी एंड बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हो. प्लम इज़ अ ब्रांड जो मैं कभी नहीं छोड़ सकती. आई थिंक मतलब आई रियली लव प्लम. तो दैट्स द रीज़न मैंने इसका शॉवर जेल मंगवाया. दिस इज बिट एट एक्सपेंसिव साइड, बट यू वांट इन अ बजट फ्रेंडली शॉवर जेल, यू कैन गो फॉर निविया और यू कैन गो फॉर many brands are there on Nykaa. You can check it out. आपको 200 रुपये में भी अच्छे बॉडी वॉशेस मिल जाते हैं. बट I just wanted to try this and this is amazing. If you are looking for a good shower gel, then you can go for this. This is amazing. So yeah guys, this was pretty much it was pretty much about my skincare products which I bought to try it out. So this product and this product, this one and this one, this both are new to me, and this one also is new to me, but I have been using this from past 8 days. तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है. तो this is something which I can recommend you. And बाकी सारे and this one also. And guys, if you want to purchase this, go and purchase from Amazon. Nykaa पे it is महंगा. So yeah, these are the 3 products जो मेरे लिए नए हैं. So I will be trying these products. Other than जो भी products मैंने show किया वो सारी चीज़ें I have tried and I have repurchased it because वो मेरा ख़त्म हो गई थी मेरी vanity में से. So yeah,
These three products are something. If you want to have a detailed review and you want me to do the review on it, please let me know in the comment section below. So I will be doing the detailed review about these three products. So now guys, this is the last product which, yeah, this one is the last. So this is the last product which is somewhat related to your skincare. It is not a skincare product, but this is a cute. I just thought to take a minute and talk about this cute littered bin. So yeah, मतलब बहुत weird लग रहा है मुझे इसके बारे में बात करते हुए, पर ये इतना cute है. I just thought to give you the show you how beautiful it is. So ये ऐसे गोल फॉर्म में आता है एंड हियर यू विल सी, यहाँ से आप यू कैन इंसर्ट योर डस्टबिन, जैसे आप इसमें अपना जो भी गार्बेज है वो डाल सकते हैं. बट दिस इज अ स्मॉल बिन विच यू कैन कीप ऑन योर डेस्क और ऑन कहीं पे भी. आई जनरली कीप एट माई वैनिटी टेबल ऑन. ये ऐसे ओपन होता है, ये ऐसे ओपन होता है एंड इसके अंदर एक अच्छा सा ऐसे गोल बॉक्स दिया हुआ है, गोल बाउल है. तो ये रिमूवेबल नहीं है, जुड़ा हुआ है इससे, बट यू कैन थ्रो इट आउट एंड अगेन आप इसको ऐसे क्लोज करके यू कैन यूज. एंड मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा. आई विल कीप द स्क्रीनशॉट ऑफ द प्राइस जो भी इसका है. आई डोंट रिमेंबर रियली, बट इट इज़ अराउंड 200 to 300. काफ़ी अच्छी बजट फ्रेंडली है ये प्रोडक्ट, बट मुझे बहुत अच्छा लगा. अभी कहीं पे भी रखेंगे यू विल नॉट फील कि दिस इज अ डस्टबिन. सो या आई जस्ट थॉट टू टेक अ मिनट एंड टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट. So yeah, basically I use this bin for my skincare. I use the skincare wipes, so मैं इसमें रख देती हूँ. और जो भी छोटी छोटी चीज़ें जो भी which we use in our day to day life while doing makeup or any skincare thing, तो ये मैं इसमें डाल के you can throw it out पूरा एक साथ जाके. So yeah, this is something which I really like. So I just thought to show you, and if you like it you can go and purchase that product. That's pretty much it from my side guys. If you like this video, please hit on the like button and please let me know in the comment section below कि आप आगे क्या देखना चाहते हैं. It will be really helpful for me to understand and bring content for you guys. So yeah, till then, bye guys.